children, we all love to eat delicious food. कई बार होता है ना, हमें घर में अपनी मम्मी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं होता. बाहर के खाने में हमें जो टेस्ट आता है वो घर के खाने में कहाँ. लेकिन ये भी सुना होगा कि लालच अच्छी बात नहीं है. आज हम इस स्टोरी में कुछ नया देखते हैं. सो आज का टाइटल है Delicious food. How lucky I am, thought Manjeer. I am invited to 2 feasts today. Feast जानते हैं ना आप? दावत. सोचिए, एक ही दिन में 2 दावत. He lived on the bank of a river near the sea. The 2 invitations he received from the neighboring villages, one upstream and the other downstream. He came to know that he was to be served mutton in the feast upstream and chicken in the feast downstream. He said to himself, I must go to the feast upstream first as I like the food there so much. And then I can go for the feast downstream if I feel like to eat something. I am going to the feast, said Manjeer to his wife. Don't you want to eat something before you go? Asked his wife. I least like that cold rice and salted fish, said Manjeer, licking his lips, thinking of the dainty dishes that he was about to get in the feast. You can have all that to yourself. क्या लगा? मैं तो इतनी अच्छी टेस्टी डिशेस खाने जा रहा हूँ. ये ठंडी राइस और सॉल्टेड फिश तुम खाओ. When he opened his boat from the jetty, the tide was out. Jetty जानते हैं? रिवर में वो जगह जहाँ पे अपनी बोट आप बांध सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ जेटी. इट वॉज डिफिकल्ट टू रो इन सच शैलो वाटर, especially when he was going upstream. He had to work very hard. Finally, he arrived at his destination tired and out of breath. अब क्योंकि टाइड सी की बाहर थी तो नदी का पानी थोड़ा शैलो था, इसलिए जब अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ उसको रो करके बोट को लेके जाना था तो डिफिकल्ट था. अनफॉर्चुनेटली व्हेन मंजीर एंटर्ड द कोर्टयार्ड ऑफ हिज होस्ट्स हाउस, कोर्टयार्ड जानते हैं ना, बाहर का आंगन, ही फाउंड दैट द गेस्ट्स वर लीविंग. द फीस्ट वॉज ऑलरेडी ओवर. सीइंग हिम द होस्ट केम टू हिम एंड सेड रिग्रेटफुली, ओ डियर सर, more people attended the feast than we expected. The food is finished. We are sorry. देख रहे हैं बेचारा कितना थका हुआ आया और फीस्ट में पहुंचते ही उसको क्या कहा उसके होस्ट ने, खाना तो खत्म हो गया है. The host apologized several times. Manjeer had hopes in the second feast, so he took leave and hurried over to the jetty. On the way he thought, no doubt I like mutton the most, but chicken also tastes as good as mutton. Excited था, चलो दूसरी जगह तो अच्छा खाना मिलेगा. At this time, the tide was in. पहले टाइड बाहर थी तो सी का पानी जो है नदी से बाहर था, तो नदी थोड़ी शैलो थी. इस टाइम में टाइड इन थी तो नदी का पानी ज़्यादा था. So rowing downstream when the tide was in was as bad as rowing upstream when the tide was out. All this hard work made his stomach ache. Still he rowed and finally reached his destination. He hurriedly tied his boat to a pole and headed for the host's house. Then he ascended the steps. Ascended मतलब ऊपर चढ़ना. So when he ascended the steps, he saw that the guests were already leaving. He was disappointed. The host saw him and came to him begging sorry. I am sorry, Mr. Manjeer. We never expected that so many people could attend the feast. So all the food is finished. You mean nothing is left? Manjeer was somewhat shocked. एक दावत में मटन खाना चाहता था, वो खत्म. दूसरी दावत में सोचा चलो चिकन भी उतना ही अच्छा है, यहाँ भी खाना खत्म. Not even a bit, said the host begging sorry.
Manjeer cursed his luck, but outwardly he said, "Never mind, just my bad luck." बुरा तो लगा, मगर अब क्या करता? When he began to row back home, he was not sure if that cold rice and salted fish was still there or his wife had eaten it too. Already fatigued and weary, he staggered to his house and almost yelled to his wife, "Is there any cold rice and salted fish left?" अब fatigued का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा थका होना. वेरी का भी ऑलमोस्ट वही मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा थक गया था. अप स्ट्रीम रो करा, सिचुएशन डिफ़िकल्ट थी क्योंकि टाइड कम थी. डाउन स्ट्रीम जब उसने रो करा तब भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट थी क्योंकि टाइड इन थी. अब जब वो घर आया, क्योंकि किसी भी दावत में कुछ खाने को नहीं मिला, तो सोच रहा था कि कुछ घर पे भी मिलेगा कि नहीं. "Yes, it is," replied his wife. "Oh, my dear wife, you are the best host in the world," said Manjeer as he sat down to eat. The cold rice and salted fish tasted as delicious to him as any other food could have. तो देखा बच्चों, जब भूख लगी होती है ना, तो हर खाना स्वादिष्ट लगता है. और जहाँ अपने घर का खाना छोड़ करके दो दो दावतों के मज़े उड़ाने थे, वहाँ घूम फिर कर फिर घर का ही खाना मिला. तो डिलिशियस क्या है? जो हम खा सकते हैं, जिससे हमारी भूख मिटती है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है. टेस्ट ही सब कुछ नहीं होता.